Thank you so much, Cheteshwar ji, for taking the time and coming all the way from Rajkot to talk to our Index Acers. So, thank you, Jimit and Samco for having me here. It's good to be amongst you all, and look forward to this evening. yeah, I mean, before we go into the topic of discipline, it'll help everyone to help it'll help if you can share your early stories and how you made it to the cricket team and how has your journey been so far. I mean. Well, I started learning cricket at an early age. It's been a long journey so far. When I was 8, that's when my father started coaching me. He has played cricket himself, so he has been my coach since that age. And I first got an opportunity to be part of the Saurashtra team when I was 13 years old. That's when I realized that I want to become a professional cricketer. So after that, I've been working hard. My first big achievement was when I got selected for the Indian under-19 team when I was 18 years old. And from then, the career has grown, and yeah, I've really enjoyed this journey. But the proudest moment of my cricketing career when I made my debut for the Indian team in 2010. As a young child, you always dream of playing for the Indian team. And when I got my first opportunity to play with all the legends of this game, players like Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Saurav Ganguly, MS Dhoni, many of them. So when I played with them, it was a dream come true moment for me. Wonderful. I think one big learning from this is that, if you want to be successful, you have to start early. You started so early in life, and unless you start early, it's going to be hard for you to be able to make it to the pinnacle and the top. But so today, I think the way we're going to do this is I'm going to ask Cheteshwar about certain aspects of his life and certain episodes that have happened in his life, and we'll try and draw some learnings from that, which we can apply in the field of trading and investing. So, Cheteshwar, what we'll do is we'll actually go straight into the most recent, one of the most famous achievements that you had, which was, you were standing like the wall at the Gaba. And what I'll do is I'll, invite, can we put the AV where we can play Cheteshwar's innings at the Gaba before we go? Resilience of Pujara. Look at that. He has taken 11 blows on the body in this innings, some on the head. He has an amazing inability actually to be able to pick up the short ball. He seems to really struggle against it, but it doesn't deter him from sticking it out, from weathering these faster bowlers' aggression and absorbing their hostility, never giving in, never shirking the challenge. A number of times that the physio was brought on when he was hit on the fingers or on the body, but completely undaunted by the challenge. Look, he's 89 balls he's faced there for 8 and 95 balls for 9. Just determined to stick it out and make it a little bit easier for the lower order batsmen, taking the opportunity to hit the odd boundary. And certainly if you bowl wide to Pujara, you're going to pay, but still happy to take blows for the team, never shirking that dedication to the crease. That was a nasty blow on the arm. There was a physio coming out to check he was all right. No bother. Back out there, right behind the next ball, and just really kind of denying the Australian bowlers any openings at all. It was the most valiant, determined, and at times almost sort of masochistic performance by Pujara, who of course was responsible partly for the last time that the Indians won in Australia. He batted 31 hours in that series. He's batted about 20 hours in this series. He must be black and blue by the end. Actually, well, that was a particularly nasty blow from a ferocious delivery from Josh Hazlewood. Thank goodness for helmets. And he got up again and was still happy to face the music. He stuck it out for over 5 hours and pulled the ball away. He was still in at tee. He picked up a few runs down the leg side off Nathan Lyon. Look at that, 43 not out at tee, 168 balls he had absorbed. So, I think for the fans of cricket, it was after a very, very long period of time that we really won something in Australia, and that was also a test series. And yeah, I think this innings was instrumental in India actually making it through. And आपने इतनी मार खाई, I think Australians को ऐसा लगा कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं है. तो
what goes behind the mindset, to play for 100 balls, keep taking and waiting to score runs? वो कैसे आप कर लेते हो? सबसे पहले तो जब इतनी बॉल लगी तो ये तो नहीं कह सकता कि मज़ा आ रहा था बट यस इट वाज चैलेंजिंग क्योंकि जब आपको ये बॉडी में इतनी बार बॉल लगती है यू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन बट ऑपोजिशन को आपको दिखाना नहीं होता है कि आपको बॉल लग रही है एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट बॉक डाउन बाय इट क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि यस ऑफ कोर्स इट वाज अ चैलेंजिंग पिच टू बैट ऑन, वहाँ पर आसान नहीं था, बॉल काफ़ी बार लग रही थी बट एक चीज़ मैंने तय कर ली थी कि आई वांटेड टू फाइट इट आउट. आई वांटेड टू शो दी ऑपोजिशन दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स, मेरे बॉडी पे कितने भी बॉल लगे बट माई गोल इज़ टू बी देयर फॉर द इंडियन टीम. आई वॉन्ट टू बी देयर, I want to stand there. As long as I am there, there is a chance for us to win the game. So I had decided in my mind that no matter what happens on the field, whatever they say, whatever they talk, Australians are known for their sledging also, so they were chirping a bit also. But I had decided that I will be there, and that is what has helped me play that innings. Because अब जब आप एक बड़ा पिक्चर देखते हो, आप जब देखते हो कि यहाँ से टीम जीत सकती है, तो कितना भी दर्द हो बट आप कंट्री के लिए खेल रहे हो, इट इज़ ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट. क्योंकि भारत के लिए खेलना और ऐसी इनिंग खेलने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत कम लोगों को मिलती है. बिकॉज इन इंडिया देर आर सो मेनी क्रिकेटर्स हु वांट्स टू प्ले फॉर द कंट्री, बट आई वाज वन ऑफ देम हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले एन इनिंग्स वेयर इंडिया कैन विन द सीरीज अगेन इन ऑस्ट्रेलिया. और एक और चीज़ जो मुझे पूछनी थी कि कई बार जो नए लोग होते हैं और इवन इन लॉट्स ऑफ अदर क्रिकेटर्स, वी हैव नॉट सीन सो मच पेशेंस, कि इफ यू सी ऑन द वीडियो even at 100 balls you were at 9 runs and 10 runs. So I think उसमें से 80-90 बॉल तो you would have just, which were way outside the off stump, you would have let it go. तो वो mindset में कि आप वेट करोगे, उनको थकाओगे, वो माइंडसेट में क्या जाता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट एक्चुअली? आई थिंक उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है. पेशेंस कम्स फ्रॉम क्लैरिटी ऑफ थॉट्स. मुझे पता था कि अगर मैं वहाँ पर लंबी इनिंग खेलूँगा, ज़्यादा बॉल खेलूँगा, तो अल्टीमेटली वो बॉलर्स थक जाएंगे और वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाद में जहाँ पर मैं रन्स कर पाऊँगा. तो मैंने एक तो बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था. आई न्यू दैट 2018 में भी जब हम ऑस्ट्रेलिया के सामने खेले थे तो उनके बॉलर की क्या स्ट्रेटजी थी, कैसी गेंदबाजी थी उनकी और आगे जाके कैसी गेंदबाजी रहेगी. तो एक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा रहे और फिर उसके बाद अब जब आप अच्छा प्रिपेयर करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द ऑपोजिशन. So I did that. I had to have a lot of patience, but I knew that if I have a lot of patience, ultimately I'll be on top. There will be a time where I would be able to capitalize. And that's what happened. I mean, I was showing a lot of patience, but when the time came, I started, accelerating. Rishabh was batting really well at the other end. Shubman batted well in that particular innings. So you need to know that आप अगर patience वाला game खेल रहे हो तो आपका भी time आएगा और वो जब time आता है, that is when you try and capitalize. So I think there is our first learning actually which is applicable very much in the world of trading and investing. कि investing में भी ऐसा ही होता है कि there are hundreds and thousands of stocks that are available, and actually investors and traders, the biggest mistake that they make is they don't wait for the right opportunity. You have to wait like a tiger for the right opportunity, and only then strike so that you are successful. I think that is one learning that is applicable very much in the game of cricket, but also applicable in the game of trading and investing. That be patient, don't try and trade every opportunity, don't try and trade or invest in every stock, every idea, every tip that you get. Wait, prepare yourself, have that mindset, and then move on. I think that is one big learning that I can convert for the world of trading and investing. But moving on, I think the second aspect of your life that I wanted to talk to you about was that आप टेस्ट क्रिकेट के किंग कहलाते हो, and आपने you see आपके करियर में आपने 100 टेस्ट मैचेस खेली है, and this is by far one of the highest number that has been played by the existing cricket team members जो टीम में है. और and you've stuck to one format. आपने आपकी एक्सपर्टीज चूज की है आप टेस्ट में, तो आपको फोमो नहीं होता कि भाई मैं वनडे नहीं खेल रहा हूँ, T20 नहीं खेल रहा हूँ, और
वो उसके साथ आप कैसे डील करते हो, you know? देखिए ऑनेस्टली एक टेम्पटेशन तो होता ही है कि मुझे वाइट बॉल फॉर्मेट खेलनी है, बट वॉट आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो टेस्ट क्रिकेट है, तो उसको कहीं पर छोड़ना नहीं है. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट. और उसके साथ में इफ़ देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी देन यस आई वुड लव टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट. वनडे और T20 में डोमेस्टिक में खेलता हूँ, काउंटी में भी मैंने खेला है. बट माई एम इज़ टू बी सक्सेसफुल इन टेस्ट क्रिकेट, और वो मेरी एक स्ट्रेंथ है. सो वन आई वुड टेल एवरी वन दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड नो मैटर वॉट फील्ड यू आर इन, बट you need to understand your strength, try and develop your strength, try and be the best with your strength. There will be a lot of temptation in life to be to get diverted yourself into something else which you are not familiar with. So be the best of what you know. आपको जो जिस चीज़ का knowledge है, आप जिस चीज़ को जानते हैं उसको पहले आगे बढ़ाएं. उसके साथ में यस नई नई चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट आपको जो पता है उसमें सबसे बेहतर बनना पहले ज़रूरी है. या एंड आई थिंक ये जो आपने कही, इवन जैसे क्रिकेट में 3 फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट, वनडे और T20, वैसे हमारे स्टॉक मार्केट में भी 3 फॉर्मेट है. जिसे जो कैश मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है वो टेस्ट क्रिकेट जैसा है, जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर लेता है वो थोड़ा वनडे जैसा है, थोड़ी फास्ट गेम है, और जो एकदम ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एकदम हाई लेवरेज ट्रेडिंग कर लेता है वो T20 जैसा है. बट आई थिंक द वन लर्निंग दैट आई कैन ड्रॉ एंड that I'd probably like to share with the audience as well is that जो success का राज है, it is in mastering one game. I think first becoming super successful, identifying कि आपके लिए कैश मार्केट ज़्यादा बेटर है या F&O ज़्यादा बेटर है या करेंसी ज़्यादा बेटर है या कमोडिटी बेटर है. Pick one game as Cheteshwar said and try to be the king, try to be successful in that particular game, understand the strengths, and that is how you will reach the pinnacle of success. I think is there anything you would like to add to that? या नहीं, मैं आपको यही पूछना चाहता था कि मैं ट्रेडिंग में कौन से फॉर्मेट में चलूंगा. आप इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट में ठीक है, यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो आप, किसी इन्वेस्टमेंट और आप लंबी इनिंग्स खेलनी है. और आप जैसे पहले बात कर रहे थे कि मेरा पोर्टफोलियो मेरे को किसी और को देना चाहिए, सो इज देयर एनीवन आउट देयर हु वुड लाइक टू मैनेज माय पोर्टफोलियो? नो, आई वुड लाइक टू से यू गिव इट टू मी, but yeah, I think yes, there is so that is one other great learning is that you pick to one game and what goes in the mindset of not having that fear of missing out. I think I'm sure because आपने वो white ball cricket में भले आपको जाना हो या नहीं, but you have not let that compromise your test game. तो वो fear of missing out आप कैसे उसके साथ डील करते हो? Any tricks or tips? I say आप कोई भी फील्ड में हो, खास करके क्रिकेट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डील विथ योर फेलियर्स. और समटाइम्स यू हैव फियर ऑफ फेलियर कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा. सो वन थिंग इज़ इन लाइफ और इन क्रिकेट यू आर बाउंड टू फेल, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ हाउ यू डील विथ योर फेलियर्स. यू कांट गेट बॉक्ड डाउन बाय योर फेलियर्स. इफ़ यू फॉल डाउन यू नीड टू लर्न टू गेट अप from your whatever mistakes you have done, whatever failures has come in your life. So one thing I have realized over a period of time is that yes, there will be failures, but how do I deal with my failures? How do I come back? How do I bounce back from my failures? And that is by hard work. I always feel that there is no substitute of hard work. One has to work hard. One needs to understand their strength. And once you start working hard, once you start understanding your strength, you start becoming confident of yourself. And that's what I have done. Yeah. I think to add, to give again a trading and investing analogy, जो चेतेश्वर ने बात कही फेलियर की, आज के तारीख में I have seen so many successful traders and investors, but जो मैक्स उनका स्ट्राइक रेट होता है, कितने ट्रेड में वो सक्सेसफुल होते हो, वो तकरीबन 60-65% ही होता है. The most outstanding, even Rakesh Junjunwala for that matter, had a strike rate of only 35%, which means that he was right only in 35% of the times. 65% of the times actually he lost money in a stock. But being confident, having that hard work, making sure that you're learning from your mistakes and failures and not over optimizing, not trying to score 100 in every innings, I think, or not trying to make money with every trade, I think that is one big
learning for every trader and investor that we can draw from the world of cricket as well. Yeah, and just to add on, I think if you look at any sports person, any cricketer, some of the best batsmen of the game, they have failed in every second innings. क्योंकि success, मतलब हर inning में अगर कोई 100 बनाता है तो मतलब that is not possible. Correct. You are not a cricketer, you are not a batsman. So you are bound to get failures, and that is something you always have to accept. Yeah. Is there आपके साथ ऐसा कोई career में कि if you've had a bad patch, how do you deal with that mindset when you had a certain series of let's say low scores or because हमारे trading और investing में भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि when markets are not in with us तो हर ट्रेड में पैसा टूट जाता है, हर ट्रेड में कोशिश करते हैं तो हम हार ही जाते हैं. तो वो माइंडसेट आप हाउ डू यू डील विद अ लूजिंग स्ट्रीक फॉर दैट मैटर? उसमें आई गो बैक टू बेसिक्स. मतलब मुझे क्रिकेट के बारे में जो पता है, अगर मेरा ख़राब टाइम चल रहा है तो मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, कैसे मैं सक्सेसफुल हुआ था, जो लोगों ने मुझे मदद की थी, मेरे जो कोचेस थे उनके साथ मैंने बात करी है कि अभी मेरा अच्छा टाइम नहीं चल रहा है तो मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, क्या क्या गलतियाँ हुई है, तो वो गलतियाँ सुधारने के लिए कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी स्ट्रैटेजी अभी लानी पड़ेगी. क्योंकि इवन इन क्रिकेट यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, यू एनालाइज योर सेल्फ, यू वर्क ऑन योर टेक्निक, यू वर्क ऑन योर टेम्परामेंट, यू वर्क ऑन योर फिटनेस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ नॉट वर्किंग वेल फॉर यू, व्हाट हैज़ वर्कड वेल फॉर यू इन द पास्ट, एंड नाउ यू हैव टू मूव विद द टाइम. तो अभी के टाइम में क्रिकेट कैसे चल रहा है, एंड इवन इन ट्रेडिंग फील्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट इज़ एंड व्हाट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर. Correct. तो आपको खुद को ये समझना है कि आगे आपको क्या हेल्प कर सकता है. सो speak to people. I think in cricket, I speak to the coaches, I learn from them, speak to some of the senior players, try and take their guidance, and then move on from there. Yeah, lovely. So I think talking to people, going back to the basics is one of the ways you deal with losing streaks. So the third aspect, that I wanted to talk about your life and your cricketing career is that लोग आपको आपके cricket team में मिरुगम बुलाते हैं, which is typically called the beast. तो लोग क्यों आपको beast बुलाते हैं, लोग क्यों, वो उसके पीछे कहानी क्या है, and why do people say that you are, and there is a saying that you are so fixated in terms of sticking to the strategy, sticking to your trends. So can you tell us a little bit about that story? Well, this is R. Ashwin's word. Ashwin ने ये बोला था. Some of other teammates has called me White Walker as well. तो इसके पीछे कहानी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने जब बल्लेबाजी करी थी 2018 में, तो काफ़ी सक्सेस मिला था. और वो टूर में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स मेरा मतलब जैसे ही मैं फील्ड पे वॉक इन कर रहा हूँ तो मेरा फेस देख के उनको एक इरिटेशन हो रहा था कि ये बैट्समैन आ रहा है तो इसको कैसे आउट करेंगे. हेज़लवुड ने काफ़ी बार मीटिंग में बताया कि वो एक उनका एनालिसिस होता है टीम मीटिंग में कि इस प्लेयर को कैसे आउट करेंगे. तो जो वीडियो एनालिसिस चल रहा था उसमें उन्होंने बोला कि मैंने पुजारा को इतनी बार फील्ड पे देखा है, उसके वीडियोस अभी मुझे नहीं देखना है. लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हिम एंड लेट्स ट्राई एंड मेक स्ट्रेटजीज फॉर द अदर बैट्समैन. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने ये नाम मुझे दिए, एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ that I stick to one method. I know that there are things which has given me success, and I don't try and change it too much. Yes, I'm always open-minded. I always try and take advice. But उसमें जहाँ तक मुझे अपनी गेम की समझ है उससे मैं ज़्यादा बदलाव नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मुझे ये नाम दिया गया. Yeah, I mean, I think that is a big honor also to have such a title and Definitely. have opposition get scared of you. That is again, it's a big honor. But I think there I've heard commentators say that there is Pujara has a certain pattern in which he plays with spin bowlers. That he likes stepping out. He very very rarely is going to sweep, and there are a certain methods and certain things that he trusts about his game. So first of all, what goes into building that conviction about that method, and secondly, how do you make sure that आप उससे deviate नहीं करते, वो mindset कैसे बिल्ड कर लेते? देखिए, अगर मैं कोई मेथड फॉलो कर रहा हूँ तो वो मुझे पता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मेथड से मुझे सक्सेस मिला है, तो उसको मुझे चेंज इसीलिए नहीं करनी है कि एक एक्सपीरियंस बन गया है. सो नथिंग कैन बीट द एक्सपीरियंस. कोई भी फील्ड में अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस से आप समझ जाते हो कि आपके लिए ये चीज़ काम कर रही है, ये चीज़ काम नहीं कर रही है. काफ़ी बार उसमें बदलाव लाना पड़ता है,
बट ज़्यादातर आपको पता होता है कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है, और मैंने वो अपने सक्सेस मंत्र को ज़्यादा बार बदला नहीं है. ऑब्वियसली यू ऑलवेज ट्राई एंड रिफाइन फ्यू थिंग्स के जो आपको अपनी गेम में ऐड करना होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑलवेज स्टिक टू माई मेथड्स. द रीज़न इज़ आई हैव worked hard for over a period of time. I've given like 15-20 years of preparation. I have that experience now that having played international cricket for more than 10 years, I know what is working for me. So when you are sure, when you are confident about what is working for you, you don't need to change it frequently. Yes, you always try and fine tune few things. You always try and add few more shots in your game, which I have done recently. I've started playing sweep shot. In between, I've gone over the top. I've hit few sixes recently in test matches also. So yes, you always try and improve on that. But apart from that, always be confident about what has worked for you. Wonderful. So I think, if I was to link this to the world of trading and investing, is that जितने भी successful traders और investors मैंने देखे, वो भी उनका भी style आपके जैसा ही है कि they stick to one aspect. उनको लगता है कि breakouts, अगर मैं breakout trading कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए वही काम कर रही है और मैं वही करते रहूँगा. And I think that is the third learning, that not only do you pick the format that works for you, कि cash, F&O, currency क्या आपके लिए काम कर रहा है, but also pick one strategy. If you want to be super successful, if you want to reach the pinnacle of your success, या तो breakout हो या breakdown हो या buying at 52-week highs हो या buying at 200 DMA हो, जो भी आपकी strategy आप आपके charting से follow करते आ रहे हो, एक चीज को पकड़ो, एक strength को पकड़ो, and you keep repeating that. You can keep adding to your game, but I think identifying that true strength and applying that again and again, that is a very, very important aspect of trading and investing. The fourth aspect of your game that I wanted to talk to you about was that, कई बार लोग आपको, even जो बैटिंग कोच है, जो आपको टीम में ट्रेन करते, कोच करते हैं, वो आपको encourage करते हैं कि try and hit over the top. Try and change certain aspects of your game. लोग, but I'm sure दूसरे आपके प्लेयर्स, आपके टीममेट्स आपको भड़काते भी होंगे, चल थोड़ा ऊपर से खेल ले, ये थोड़ा अग्रेसिवली खेल ले. तो बट उसमें भी देयर इज अ माइंडसेट दैट यू हैव, दैट नहीं, मैं को जो करना है मैं वही कर रहा हूँ. आई नो व्हाट माय सक्सेस पैरामीटर्स आर. सो व्हाट गोज इनटू द डिसिप्लिन ऑफ डूइंग दैट, व्हाट गोज इनटू द माइंडसेट ऑफ स्टिकिंग टू योर गेम? वेल, इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब when whether you are playing cricket or wherever, people will always give you advice काफ़ी मिलती है. So as an individual, one needs to understand, खुद को पता होना चाहिए कि कौन सी एडवाइस आपके लिए वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी. सबकी एडवाइस लेनी ज़रूरी है, सबको सुनना ज़रूरी है, बट उसके साथ में वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ समथिंग विच हैज़ वर्कड फॉर मी. मेरे लिए मैंने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्क किया है, उसमें अगर आपको कोई चीज़ की वजह से सक्सेस मिला है, तो आपको अगर कोई एडवाइस देता है कि आप नई चीज़ ट्राई करो, तो बिल्कुल करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, बट आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको छोड़े बिना. सो व्हाट whenever the coaches, some of the players, whenever they try and tease me, you should try this, you should try that, you can play an attacking game. What I try and do is that I'll have an argument. I'll try and tell them that by playing lofted shots, I need to understand what the situation is. क्योंकि आप situation को समझे बिना अगर आप lofted shot मारते हो और मैं as a batsman out हो जाता हूँ और टीम हार जाती है, so you are failing, you are not playing with responsibility. तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी responsibility होती है जब आप इंडियन टीम के लिए खेलते हो. So one has to understand their own responsibility. Same applies in different fields, because whatever you are doing in your field, you are responsible for yourself, you are responsible to your family, to your colleagues. Especially in a team environment, you need to understand what your colleagues also are doing, and you want to try and help them. So मेरी methods को मैं अगर stick करता हूँ, तो why I do that is I follow a good routine, I follow a disciplined life. As a sports person, I need 8 hours of sleep, so I always try and make sure that I go to bed by 10 o'clock and then wake up at 6 o'clock. तो एक अच्छा रूटीन फॉलो करता हूँ, और वो अच्छा रूटीन जब फॉलो करता हूँ तो उससे मुझे पता चलता है कि what I have to do in my day, how I am utilizing my time. So
all the things what you do, it's important to understand yourself, and it's important to understand your surroundings as well. Great. I think great point. I think the learning again here is that you cannot get swayed. आप किसी के बोलने कहने पे कुछ नहीं. Ultimately you will keep receiving free advice from time to time. हमारे मार्केट में भी आप चलोगे तो लोग आपको 4 चीज़ बोलेंगे, ये ले लो, वो ले लो, आज मेरे पास ये टिप है, मेरे पास वो टिप है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा घर वाला बाजू वाला बोलेगा रिलायंस ले लो, कोई और बोलेगा इन्फोसिस ले लो, ये ले लो. तो बट अल्टीमेटली यू हैव टू स्टिक टू योर गेम. यू कैनॉट गेट स्वेड कि भले कोई कुछ भी बोले, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अप्लाई दैट टू योर गेम, सी इफ दैट वर्क्स, इफ इट वर्क्स फॉर योर स्ट्रेटजी, एंड देन मूव ऑन. I think, and the fifth aspect about the game that I wanted to talk to you about is that again there are stories where लोग कहते हैं कि Pujara is an advanced planner. कि even when he starts, let's say he's playing with Stain, he's thinking about how he's going to score from Domini later on in the game. कि he's not worried कि Stain भले ही कैसी भी bowling कर रहा हो, कैसे ही, but मेरे run spin के सामने, Domini के सामने बन जाएंगे, मैं खेल लूँगा तो मेरी planning हो जाएगी. और while people think that that test playing also, but there are stories in the cricket room that say that nahin, Pujara is a very very well advanced planner even when it comes to building his runs and his innings. So how do you think about that? How do you plan? How do you think ahead? And how do you not get swayed? आप वो tension में कैसे नहीं आ जाते कि भाई Stain मुझे out कर देगा? Well, the most important part for that particular strategy is your preparation. तो आप कैसे प्रिपेयर करते हो वो काफ़ी ज़रूरी है. आई वुड लाइक टू शेयर अ स्टोरी हियर. व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 2011, दैट वाज माय फर्स्ट ओवरसीज टूर. और वहाँ पर स्टेन और मॉनी मॉगल जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बल्लेबाजी करूँगा. आई वॉज फाइंडिंग इट सो डिफ़िकल्ट. आई डिडंट नो हाउ टू स्कोर अ सिंगल रन. और वो सीरीज़ जब ख़त्म हुई तभी मैंने सचिन पाजी, राहुल द्रविड़ से बात करी कि मैं इसमें और कैसे बेहतर प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि साउथ अफ्रीका में कैसे बल्लेबाजी करनी है. तो उसके बाद उन्होंने मुझे थोड़ी टेक्निकल एडवाइस दी. उसके बाद 2012 में जब मैं घर पे गया तो मैंने काफ़ी ओवरसीज़ टूर में कैसे बल्लेबाजी करनी है उसके ऊपर वर्क किया. मैंने मेरी बैकफुट की गेम इम्प्रूव करी. तो ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने मैंने अपने आप को दिए कि मैं इसके लिए 2013 में वापस साउथ अफ्रीका की टूर आ रही थी, तो मैंने अपने आप को 6 से 8 महीने दिए कि इसमें मैं कैसे तैयारी कर सकता हूँ. तो 2013 में जब हम वापस गए तो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. आई न्यू दैट वॉट विल डेल स्टेन एंड मॉनी मॉकल डू इन साउथ अफ्रीका, वॉट डू आई हैव टू डू टू काउंटर दैट. And that's when that strategy came, that I'll have to bat well when they are bowling well. I'll respect their good balls. But there will be a time where JP Dumini will come and bowl. So that's when I'll try and capitalize. कि मैं जब उनके spinners आएंगे तो वहाँ पर attacking game खेलूँगा. But उसके लिए तब तक मुझे patience रखनी होगी. मुझे डेल स्टेन और मॉनी मॉकल की गेंदबाजी में आउट नहीं होना है. उनके अच्छी गेंद को डिफेंस करना है. जहाँ पर मुझे लूज़ बॉल मिलेगी, जब बॉल पुराना हो जाएगा तो वहाँ पर मैं अटैकिंग गेम उनके सामने भी खेल सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे क्रीज पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है. सो आई वर्कड ऑन इट. आई प्लान्ड अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट particular tour, and then I got a lot of success as an individual, even as a team. We did really well over there. Okay, wonderful. And I think if I was to sort of correlate this to the game of trading, आज पिछले 18 महीने से हम जो स्टॉक मार्केट में लोग हैं उनके लिए ये साउथ अफ्रीका या ओवरसीज सीरीज जैसा टाइम चल रहा है. सब खराब टाइम चल रहा है. कोई भी ट्रेड करो तो सक्सेस नहीं मिल रही है. कोई हर 4 ट्रेड में आपका 2 ट्रेड में पैसा टूट रहा है. ऐसा ही टाइम चल रहा है. बट आई थिंक हैविंग दैट माइंडसेट दैट अपना भी अच्छा टाइम आएगा, एंड वी विल हैव सम टाइम when we'll wait, we have to make sure that we don't give away our wicket at this point of time, I think. Correct. And protecting capital in this tough time for over 18-24 months जो हम स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए बहुत खराब गए पिछले. तो ये टाइम पे जिसने रिस्क मैनेज किया है, जिसने अपना कैपिटल बचाया, अपनी विकेट बचाई है, उनको एक चांस मिलेगा जब डोमिनी आएगा 4-6 मारने का. तो वो आई थिंक दैट इज वन लर्निंग दैट आई हैव, दैट यू वेट, डोंट treat that every trade is the final. Even in bad times you'll have to keep slug, make sure that you go through with your struggle, and at the end of it survive so that you can wait and make money in a better day. Same way that it works in cricket, you make runs of a better bowler. Definitely. So
that was my final question. What, I think we are going to be running out of time. We just have a couple more minutes. What I'll do is I'll take an audience question for you, Cheteshwar. I have a question from Dharmesh Manot, who's asked, what is your mantra for a calm and composed long innings on the field, And Well, what has helped me is I do yoga and breathing exercises, which has helped me immensely to stay calm under pressure. Also, having positive mindset. Whenever you are going through a bad time, a bad phase in your career, you have to think positive. You have to believe that there will be a good time, and that only comes with positive attitude and positive thought process. So for me, the most important part is कि मैंने जो yoga, breathing exercise, थोड़े time नहीं, but I can proudly say that I have been doing this for almost 5 years. So I have seen the results. तो हर चीज़ में मतलब एक बात तो काफ़ी बार रिपीट होती है, वो है पेशेंस. मतलब आप एक चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेशेंस से करते जाओगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा कि जहाँ पर आपको सक्सेस मिलता है. सो फॉर मी टू स्टे काम, stay calm under pressure, the thing which has helped me is yoga and breathing exercises. Okay, wonderful. And I'm just going to ask the final question, that's again come from a gentleman called Mr. Mitesh Shah. And I'll probably tweak that a little bit to ask, how do you manage your own finances, Cheteshwar? Do you invest in the stock market? Are you a part of the community of investors here? And how do you look at money management? So enough of the cricket game, but I'm sure you're a wealthy man, and so how do you go about that? Yes, I do invest in stock markets, but मेरा knowledge कम है, so I give it to people who are knowledgeable. So my wife, she has done MBA in retail and marketing, so she is very much aware about the stock market and other financial aspects. So she is the one who is managing my all the financial aspects. So that includes stock markets and other investments as well. Wonderful, wonderful. So let's have a big round of applause for Cheteshwar. Thank you so much. Thank you. For being here with us. Thank you so much for taking the time, sharing your insights and your routines. I'm sure it's going to be super helpful for a lot of people. And we've had 5 learnings from Cheteshwar's cricketing career that we can also apply to the world of investing and trading. And I hope this is helpful to people who are sitting here in this room. So that's it. Thank you so much. Thanks, Sumit. Thank you all. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.